guys, this is Michu and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to create this iconic brown colored smoky eyes. I think smoky eyes मुझे बहुत पसंद है, but brown smoky eyes हुआ तो मज़ा ही आ जाता है मुझे. So I thought to create a simple look for you all. इस वीडियो में मैंने एकदम सिंपल रखने की कोशिश की, एकदम स्टेप बाय स्टेप, and I would love to see you guys recreating this look. तो मुझे टैग करना स्टोरीज में इंस्टाग्राम पे. Before starting the tutorial, I would like to show you all how it looks. So this is what we are gonna create today. ओके, सो एज यू गाइस कैन सी मैंने अपना बेस कर लिया है. आज मैंने बहुत ही मन लगा के अपना बेस किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैंने ना ये फाउंडेशन यूज़ किया है. दिस इज़ टू फेस्ड बॉर्न दिस वे इन द शेड नेचुरल बेज और मज़ा ही आ गया है. अगर आप पास से भी देखोगे तो वाह. Okay, so now let's get into the eye makeup. To start my eye look, I'm going to create a base first, and for that I'm going to use this concealer. This is the NARS concealer in the shade medium to ginger. ये ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बेस पे लगाना था जो लाइट वेट हो और उसका कवरेज भी अच्छा हो. It's a really good concealer. So I'm just gonna apply some on my eyelids like this. वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ना जो अंडर आई में कंसीलर लगाया था वही मैंने ऊपर लगा दिया था. But still I'm gonna apply it because it's really important to create a even toned base. और इससे अपना आई लुक बहुत लास्ट भी करेगा और पिगमेंटेशन तो दुगना हो जाएगा. And now I'm gonna use this K Beauty setting powder. इससे मैं सेट कर दूंगी वरना वो बहुत ज़्यादा क्रीजी हो जाएगा. I'm also gonna apply it under my eyes. थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगा रही हूँ जिससे मुझे पता रहे कि कहाँ मेरा आई शेडो जा रहा है. If you see, मैंने ना अपना पाउडर इस तरीके से लगाया जिससे मुझे मालूम रहे कि मेरा आई शेडो कौन से साइड जा रहा है. It's like it will create a blueprint. I love the setting powder. I think ये मेरा 3rd या 4th होगा. बड़ा ही अच्छा एकदम fine powder. I really love it. And now our base is all ready. So we are going to start with a bronzer. This is Wet n Wild bronzer in the shade What Shady Beaches. For the first step, I'm just applying my bronzer as a transition color to kind of create a backdrop for other eyeshadow. Applying the same bronzer to my lower lashes now. Next, I'm gonna take this deep brown color. It's called Cocoa, and I'm just gonna pack this color to my lid, and then I'm just gonna start blending it out. I'm so sorry, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है. बाहर मेहमान आ गए हैं तो उनकी आवाज़ बहुत आ रही है, but anyways. I'm gonna take my all-time favorite kajal. This is the K Beauty. I love this kajal. मुझे नहीं लगता इससे अच्छा काजल कोई है इस मार्केट में. मुझे इतना पसंद है ये काजल और ये हमेशा मेरे मेकअप पाउच में होता है no matter what. I'm just gonna apply a very thin line. And now I'll just start blending it out. I'm applying the black eyeshadow just above the black kajal to give that nice smoky matte look. Applying the black eyeshadow is also giving that nice intense ombre look. Now look at this. This is the difference. This is just with the kajal and this is with the kajal and the black eyeshadow. This one is giving you more smoky, nice, sultry effect. और सिर्फ जब काजल लगाया तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है. वो छोटे से इफेक्ट की कमी है. And that's why I really like to add some matte black eyeshadow whenever I apply a liner or anything. मैं ना ब्राउज करना तो भूल ही गई. So I'm just using this Pooly brush from Huda Beauty. और मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ तो I'm just gonna brush it out in upward direction. For my mascara, I'm gonna use this L'Oreal Paradise Love Liberté mascara. This is from their limited edition और I think ये मिंत्रा में मिलता है. बहुत ही अच्छा मस्कारा है. ये बस फ़र्क इतना है कि वॉशेबल है और जो L'Oreal Paradise है वॉशेबल नहीं था. So this is how it looks. Look
at the volume guys. ये ना मतलब मुझे रेयर ब्यूटी का मस्कारा बहुत पसंद है. आई थिंक ये उसके टक्कर में आ रहा है. यू शाउट आउट टू दिस मस्कारा. आई एम जस्ट गोना कंप्लीट द रेस्ट ऑफ माई फेस विद ब्लश, हाइलाइटर and I'll be right back. So I'm back and this is the final look. For my bronzer I have used the same one which was the Wet n Wild in the shade What Shady Beaches, and for my blush I have used this one. This is from Clinique in the shade 12 Pink Pop. I really like this blush. The longevity is really good. I have applied Sugar Lip Crayon, my all-time favorite, in the shade Emma Woodhouse, and for my liner I have used the Huda Beauty Lip Contour in the shade Warm Brown. So this is the final look. I hope you guys enjoyed it. मैंने कोशिश की कि एकदम simple और सादा रखूँ. और let me know if you guys want more videos like this, and I will see you guys next time. Bye.